Hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you all are aware that every Sunday at 8 p.m. We come up with this session where I do ask questions related with static GK. So am I audible and visible? So if I'm audible and visible, everything is fine. Please write in the comments, yes sir, you're audible. So basically in this class also, like we were doing in the previous Sundays, that I'm asking questions from previous year questions of very prominent exams. Okay. So let's begin with the first question. Okay. So these are actually prominent government exam में जो questions आते हैं standard, because these are copied in different law entrance exam I have seen. Okay. So I'll give you questions. And mostly questions होगा वो polity से ही होगा, मतलब constitution and things related with that. But here the first question is related with history. And please read the question and then answer me. Yes, good evening guys. Good evening everyone. So the name of Ashoka, which is mentioned, you will find it in different inscriptions, is actually Devanam Priya Dasi ya Priyadarshi. So D is the right answer to this question. Yes, V. Sharma, Safi, Ayush, Nasha, you are right. D is the right answer. And this was decoded by James Prinsep. And he was an archaeologist. He actually decoded that his Devanam Priya Priyadarshi is none other than Ashoka. तो इनका पूरा नाम था देवनाम प्रिया प्रियदर्शी. ठीक है. So Devanam Priya means beloved to the gods and Priyadarshi means one who regards everyone amiably. ठीक है. कहीं पर प्रियदर्शी की जगह पियादासी भी लिखा होगा. Sometimes it is written Devanam Priya Piyadasi. पाली में ऐसे लिखते हैं, पाली लैंग्वेज में, but in Sanskrit or Hindi we write it Devanam Priya Priyadarshi. ठीक है. So you should know this. These are asked in the exams. So D is the right answer. Let's move on to the next question. Please read it. देखो कुछ questions आज के ऐसे होंगे. In today's class, I'm just giving you a hint. Some of the questions will appear to be very difficult, but they are not very difficult. तो जैसे आप इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख रहे होगे, आप डर जाओगे देख के. But trust me, these are not very difficult questions. ठीक है. This actually expects you to have a little common sense and answer me. And even if you have not read very much in detail, but with the help of examples and the past experience, you can answer. Which is not explicitly mentioned in the constitution, but is followed as a convention. यानी constitution में mention नहीं है, but general practice में follow किया जाता है. People are saying C. What is sections in C? All section of citizen in हर तबके, all society, people of all religion, race, caste, gender. इसका मतलब हुआ section. देखो अब मैं आपको कॉमन सेंस थोड़ा सा बताता हूँ. द फाइनेंस मिनिस्टर इज सपोज्ड टू बी मेंबर ऑफ लोअर हाउस लोकसभा. ऐसा कोई जरूरी है कि फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा से होना चाहिए? नहीं. अरुण जेटली वाज द मिनिस्टर, है ना. इवन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द अपर हाउस, राज्यसभा से. तो ये तो होगा ही नहीं. Then the prime minister has to resign. चलो मैं बी छोड़ रहा. All section of citizen are to be represented in the council of ministers. Section means हर समाज के तबके, people of all religion, people of all caste, people of every region, whether north, east, south, east. Is it practiced as a convention all the time? No. हमेशा follow किया था ये convention? नहीं follow किया था. There are a lot of cases where actually you will find people, let's say of one caste or one religion or one region missing and all. ठीक है. If both the president and vice president demits office simultaneously before then, speaker of the Lok Sabha will officiate as the president. ऐसा होता है क्या? ये कब से होने लगा? ये तो किसी हाल में नहीं होगा. When there is no president and vice president, who will act as a president of India? This you should be knowing it.
अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होंगे? यस, सीजीआई होते हैं. यस, वेरी गुड वीर शर्मा. So if there is president, fine. If the president is not there, then vice president will act as acting president. If the vice president is also not there, तो CGI. तो D तो किसी भी हाल में नहीं होगा. तो A और D तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे. ये तो बहुत आराम से एलिमिनेट. आप B और C में कंफ्यूज कर जाते तो मैं मान जाता कि चलो ठीक है. बट ये कोई गारंटी नहीं है. ये तो एकदम श्योर शॉट है. आपको पता होना चाहिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं मेंशन्ड है. बट अगर मेजॉरिटी खत्म होगी, if the no confidence motion is passed, then of course it means you will have to resign. Why? Because Article 75 Clause 2 की वजह से ना. Clause 2 या 3 में मेंशन, आप चेक कर लीजिएगा. Which talks about कि Council of Minister is collectively responsible to Lok Sabha. तो अगर no confidence motion pass हो गया तो you have to resign, है ना. Explicitly resign करना नहीं मेंशन है कि आपको resign करना पड़ेगा. But it means so that in the lower house or in the Lok Sabha, if the government does not have majority or the government falls or the no confidence motion is passed, then the prime minister has to resign. ठीक है. तो ये this is the most perfect answer. B is the right answer. बहुत सारे difficult नहीं था, eliminate करके पहुंच सकते थे. Okay, here is the next question. Please read it and then answer me. Why is there is no deputy prime minister? Tanvi Jan, in constitution there nowhere actually the concept of deputy prime minister is mentioned. However, in some incidents in the past, deputy prime minister were made, which was challenged in the court, but the court upheld it. Court said, okay, deputy prime minister is nothing but like other council of ministers, है ना. तो उसमें उतना बड़ा issue नहीं है. There can be or may not be deputy prime minister. देखो, आपको correct answer choose करना है. Some people are saying D, some are saying B. Okay. देखो, the president shall not be a member of either house of the parliament. Yes, it is true. Article 59 में mentioned है. And the parliament shall consist of president and two houses. ये तो मैंने बहुत बार बताया 79 में. That the parliament consists of president plus Lok Sabha and Raj Sabha. ये तो मैंने बताया Article 79. तो 2 तो आपको पता होगा. But ये भी पता होना चाहिए कि जब president अगर आपको बनना है, जिसे आपको याद होगा जब प्रणब मुखर्जी, अब थोड़ा छोटे हो गए उस टाइम पर, but when Pranab Mukherjee was getting elected, when there was election happening for him, so he first resigned, ठीक है, and then fought the election for president of India. क्यों? इसलिए कि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, लोकसभा के एमपी थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे. उनको रिजाइन करना था फर्स्ट, and then he can fight the election. ठीक है. तो क्यों? Because अगर वो either of the house यानी लोकसभा या राज्यसभा के एमपी है तो आप पहले रिजाइन कीजिए थे. So the right answer is B is the right answer, both 1 and 2. ठीक है. Yes, Safi, normally you're right. And Ayush Nasha has also answered BP. ठीक है. Okay, so Article 59 talks about it. Shall not be a member, and Article 79 तो मैंने बता दिया. Now here is the next question. मैं क्यों पूछ रहा हूँ? Because I have seen personally, मैंने कुछ AILET के previous questions और different exams से उठा के देखा. वो करते क्या है कि government exams के जो simple easy questions होते हैं उसको copy करते हैं, मतलब directly या indirectly. ठीक है. So please tell me this question, answer to this question. Anti-defection law से related कौन सा schedule है? And which amendment is related with that? Yes, Dharani, V. Sharma, Safi, or Preston. You are right. 52nd Amendment, 1985. Very good, V. Sharma. So basically, it came during the time of Mr. Rajiv Gandhi time, है ना? So D is the right answer to this question. Yes, Ayush Samarth, you are right. ये तो अक्सर न्यूज में रहता है, anti-defection, horse trading, अक्सर आता है न्यूज में. तो ये तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए. Okay, to prevent MPs and MLAs from changing parties after getting elected and all. Yes, great. Samarth, Safi, you are the right, Ayush. D is the right answer. Let's move on to the next one. It's a conceptual question. These are conceptual questions. Yes, that terminology is mentioned in political science book in 11th or 12th book. Yes, President Patwari, you are right. You have answered it rightly. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में जरूर देख लिया करो कि क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है. ठीक है. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एंड दैट इज व्हाई आई एम गिविंग, बिकॉज इट विल हेल्प इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट्स. डोंट नो नहीं, आप लॉजिक थोड़ा सोचो, थिंक.
इतना आपको पता होगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल के अंडर में होता है? So if I want to amend the constitution, there are different articles, but one article is very popular. उस आर्टिकल का नाम बताइए। Amendment to constitution, because yes, 368, yes, वीर शर्मा एंड सैफी बोथ आर राइट, 368, ठीक है। अब जब हम अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कौन कर सकता है? से थिंक ऑफ दिस, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास तो किसी भी हाल में पावर नहीं होता है। एमएलए एमपी एमएलए स्टेट लेवल पे तो नहीं करेंगे, नहीं तो हर स्टेट वाला अपना अपने मर्जी करने लगेगा अमेंड करने के लिए। इनिशिएटेड यानी शुरुआत कौन करेगा? कैन, यस वीर शर्मा, वेरी गुड। When you are answering it, you should answer it confidently. Yes. तो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं करेगा तो ऑप्शन 3 काट दो। अब बचा 1 और 2 और 1। अब पार्लियामेंट में किसी भी हाउस में इनिशिएट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लोकसभा से भी इनिशिएट हो सकता है, राज्यसभा से भी। इट्स नॉट अ बिग डील, सो द राइट आंसर इज डी। यस, आयुष वाज राइट। Then President Patwari is also right. Safi Nomani, you are also right. Dharmiha, D is the right answer. एकदम सिंपल क्वेश्चन है। स्टेट लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे इनिशिएट करेगा? हर स्टेट अपना अपना करने लगेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसे भी पार्लियामेंट के पास पावर होना चाहिए बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंडिया लेवल पर है, ठीक है। तो रीजनेबल भी नहीं है। इनिशिएट कहां किया जाएगा, चाहे तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ठीक है। सो इट्स वेरी रीजनेबल, इट्स वेरी सिंपल, बहुत मुश्किल है भी नहीं। I mean, दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने आपको बताया अपेरेंटली वो डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन होगा। सो टुडे आई हैव टोल्ड यू many of the questions appears to be very difficult, but they are very easy. Some of them are very easy, some are actually easy. Okay. Now read it and answer me. This is a very, very, very easy question. जाओ, इतना मैंने बता दिया। And I'm expecting everyone to answer. Yes, Dil Singh, Donat, Veer Sharma, Samarth, Tarini, Ayush, Preston, you are right. 73rd and 74th अमेंडमेंट क्या चीज के लिए था? 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज, बस हो गया, मिल गया हमको। आई गॉट द कीवर्ड, बाकी कहीं पंचायती राज नहीं। अगर कहीं और होता ना, कोई और ऑप्शन में, तब हम चेक करते कि कौन मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। सो यस, देयर इज ओनली वन प्लेस। एंड 74th अमेंडमेंट जो था वो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए था, यूएलबी, अर्बन लोकल बॉडीज एंड म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ऑल के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यस, ग्रेट, समर्थ, साफी, यू आर राइट, आयुष। हां, okay, the next one, schedules of the constitution को थोड़ा सा एक बार देख लिया कीजिए, है ना। एक्चुअली सॉरी, बी और सी सेम ऑप्शन चला गया गलती से। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज की बात करता है? कितना आसान है। अच्छा, ये ऑप्शन ए किससे रिलेटेड है? 7th शेड्यूल, ये तो आपको सबको पता होगा, है ना। और कंटेन्स लैंग्वेजेस लिस्टेड जो है वो 8th शेड्यूल है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको कहते हैं? यस, वीर शर्मा, वेरी गुड। ए 7, बी एंड सी 8 था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स किसको कहते हैं? मैंने बताया, व्हाट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स? यस, धरनी, वेरी गुड। राज्यसभा को कहते हैं, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। यस, ग्रेट, डी इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ, बहुत सारे लोगों ने राज्यसभा आंसर लिखा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, गुड। If a new state is to be created, which one of the following schedules of the constitution must be amended? हाँ, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा को कहते हैं। ग्रेट। मैंने बताया नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कितना मेंशन है। यस, कहां मेंशन है? यस, वीर शर्मा, प्रेसिडेंट, सैफी, और राइट, फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। अगर आपको नया स्टेट बनाना होगा तो कहां, उसी को चेंज करोगे ना। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? यस, Dharini, very good. Yes, 28 states and 8 union territories. Yes, Anubhav, you are also right. Yes, Veer Sharma, great. 28, ठीक है। सो इज द राइट आंसर। हाँ, शेड्यूल की बात हो रही है, ठीक है।
और कौन सा लॉ यूज किया था? आर्टिकल 3 यूज किया जाता है टू कार्व अ न्यू स्टेट, ठीक है, नया स्टेट अगर आपको कार्व करना है, लाइक तेलंगाना वाज कार्व्ड आउट एंड आल्सो द यूज ऑफ आर्टिकल 3 इज डन, पार्लियामेंट कैन डू इट. Now here's the next question. थोड़ा सा ये वाला I agree, this is slightly difficult question. But I'm giving it because we have seen some. अच्छा पहले आप आंसर कर दो, अक्सर न्यूज में रहता है ना. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. तो दो लॉज बने गए थे, ठीक है, नॉट ए, ठीक है, बी 93rd अमेंडमेंट. एक तो 86th अमेंडमेंट था which added the concept of right to education, ठीक है, आर्टिकल 21 कैपिटल ए ऐड किया फंडामेंटल राइट्स में, 45 में डीपीएसपी में जाकर के ये ऐड किया, ठीक है, और 51 कैपिटल ए ने फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया, ठीक है. Then similarly 93rd amendment also talked about establishes right to free and compulsory education for age between 6 to 14 years, ठीक है, उसमें और डिटेल किया, ठीक है ना, चूंकि चिल्ड्रन को फीस नहीं मांगा जाएगा, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बिलो पॉवर्टी लाइन वाले के लिए 25% रिजर्वेशन होगा, ठीक है. सो ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो, सो बी इज द राइट आंसर. Here's the next one. OBC Amendment Numbers. Okay, let me check it. Just read. Yes, okay, let me correct it. Actually, A भी आंसर हो सकता है, ठीक है, इसका पहले का जो आंसर था इसमें A भी आंसर हो सकता है, ठीक है, and I think the most appropriate would be A, so please correct this answer, ठीक है. कुछ लोगों ने B बताया था and I have verified it कि रिजर्वेशन जो 27% का था 93rd अमेंडमेंट, just I have checked it, रिजर्वेशन रिलेटेड लेजिस्लेशन आल्सो, ठीक है. ठीक है, so that can also be correct. Fine. So we are talking about this one. It shall be the duty of the union to protect every state against external aggression. और ये न्यूज में था, recently utilized in Manipur. Yes, वीर शर्मा, इसीलिए मैंने ये पूछा था, एक्चुअली ये करंट अफेयर्स का पार्ट, इसलिए मैं पूछा था. हाँ हाँ, 93rd अमेंडमेंट में एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, एक अमेंडमेंट में बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, इसलिए 93rd अमेंडमेंट थोड़ा सा वेग था. खैर, ये वाला इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, 355. तो ये काफी न्यूज में था, मणिपुर क्राइसिस से रिलेटेड है ना. इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस. मान लो फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ मणिपुर, बिकॉज इफ लेट्स से द पुलिस इज नॉट एबल, द लोकल पुलिस जो होती है जनरली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है, so the local police is not able to control it, then it is the duty of union to come. तब यूनियन क्या करेगी? So union will send CRPF और CISF, ITBP जो भी required होगा, then army, ठीक है. So if things goes out of the hand, if there is no public order, generally public order state में, state list में होता है, it's the responsibility of the state to control law and order, police, public order, etc. But if the state government is not able to do it, then 355, मतलब अब यूनियन की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आर्मी एक्सेट्रा भेजे, ठीक है. सो दैट इज व्हाई 355 वाज वेरी मच इन द न्यूज़. ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इट अपीयर्स टू बी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन. आपको देखने से डर लग रहा होगा, थोड़ा सा मैं आसान कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे पढ़िए. एक दो तो मैच कराना, पूरा मैच हो जाएगा.
कोड्स या ये वाला कोड्स मैच कराना, ABCD ऑप्शन से। इतना टाइम क्यों लग रहा है? बिकॉज दिस इज वेरी इजी, आई मीन लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड, ये तो बताया जाता है। A का 3 यहाँ पे है इस दोनों में, तो A और C काट दो, खत्म। अब हमको इतना तो पता होगा फंडामेंटल राइट्स US, B का 5, चलो अभी भी यहीं पे। अब हमको देखना है कंकरेंट लिस्ट इन यूनियन, नहीं पता। इंडिया से यूनियन विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन, ये मैंने बताया था आपको कई बार। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा से लिया गया, D का 2, ये आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस। यस वीर शर्मा, राइट। अनुभव सिंह, यस। देन दिल सिंह डोनट, सैफी नोमानी, प्रेस्टिन, यू ऑल राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। और C का 1 यानी C यानी कंकरेंट लिस्ट इन यूनियन रिलेशन, तो ये जो है वी हैव टेकन इट एक्चुअली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये भी मैंने कुछ दिन पहले बताया था। कॉन्करेंट लिस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एटसेट्रा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और ये तो पता ही नहीं जिसको, जो ऑप्शन डी है ना, जो कनाडा वाला, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कहते हैं कि वी हैव फेडरलिज्म बट विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेरी सिमिलर टू द कांसेप्ट इन कनाडा, ठीक है। हाँ, क्वाजी फेडरल भी कई बार वर्ड यूज करते हैं, केसी वियर में यूज किया वर्ड, यस वीर शर्मा। So this is not a difficult question. तो मैं उम्मीद कर रहा था आप लोग करते हैं आंसर फटाफट। Now here is the next question. Again, very easy question. And I'm expecting at least 7 to 8 people to answer this question. ये AILET में इस तरह का क्वेश्चन आता है, मतलब थोड़ा सा अलग फॉर्म में, पर इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, I've seen it. मैंने बताया ना, डिफरेंट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड गवर्नमेंट एग्जाम से क्वेश्चन दे डू कॉपी हियर एंड देयर। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना, तो आप फौरन पकड़ लोगे एग्जाम हॉल में, ये आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर एक्सपेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यूजीसी एक्ट के अंदर बनाया गया, तो स्टैचुटरी बॉडी NHRC एक्ट इज देयर, है ना। क्या है उसका, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, स्टैचुटरी बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच आर्टिकल? 324, वेरी गुड धारिणी राशि, ग्रेट। हाँ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के लिए CVC एक्ट इज देयर, आई थिंक 2013 वगैरह बनाया गया था, देख लीजिएगा। यस, आयुष सैफी, एकदम सिंपल है। 324 टॉक्स अबाउट इट। बस क्वेश्चन जो पूछा गया थोड़ा सा घुमा के पूछा गया तो आदमी डर जाएगा, बट अदरवाइज देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन इट, ठीक है। सो यू शुड नो इट, ये आपको पता होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। और ये भी मैंने कई बार, अगर जिन्होंने संडे 8 PM वाली क्लास देखी होगी बार या मेरी क्लासेस देखी होगी, दे कैन आंसर इट। और जिन्होंने नहीं देखी होगी उनके लिए हो सकता है मुश्किल हो, बट ये क्वेश्चन मैंने करेक्ट इनकरेक्ट सबका ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस 47, यस वीर शर्मा, प्रेसिडेंट शहर, यू आर नथिंग। देखो, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, ये आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट्स से मेंशन्ड है। यस वीर शर्मा, वेरी गुड, फर्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट, ग्रेट वीर शर्मा। हाँ, prohibition of consumption except for medicinal purpose, intoxicant drinks etc. article 47 which has been implemented, जब मैंने बताया भी था, बिहार, गुजरात यहाँ implemented भी है ना, liquor ban and all, वही तो है वो। So this is DPSP, this is fundamental right, and question is asking DPSP, so the answer is very simple, B. Yes, Pristin, Safi, Ayush, you are right. So B is the right answer. ये भी बहुत मुश्किल नहीं था, do not say कि सर बहुत tough question है, but these are easy ones, है ना। ओके, है ना, ये 47 का पूरा डिटेल है। द नेक्स्ट वन, दिस इज आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, दोज हु हैव वॉच्ड माय यस्टरडे क्लास ऑन लद्दाख, फॉर देम इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। कल मैंने लद्दाख पे क्लास लिया था, so I'm expecting you all to answer. Yes, Samad, President Dharani, Samad. Why people are marking option C? 7 schedule talks about it. 7 schedule talks about 3 list. The right answer is B. ठीक है, मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, but please watch it this video.
ठीक है, द लद्दाख प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक एंड 6th शेड्यूल, इसमें मैंने बताया है 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल 371 एटसेट्रा एंड ऑल, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी, इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये शर्मा प्रेस्टन, वी आर कमिंग टू योर क्वेरी, उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। सो फर्स्ट लेट मी डिस्कस, देन आई विल एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन मैं बताऊं कहां का पूछा हुआ है, ये बोर्ड्स के 12th बोर्ड्स के एग्जाम में आया है, फिर एक बहुत प्रोमिनेंट गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और ये मतलब जैसे होता ना है वेरी ऑफन बीइंग रिपीटेड इन डिफरेंट एग्जाम्स, उस टाइप क्वेश्चन में। And I still remember this is very prominent question, so I'm expecting कि आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। You should know the answer to this question. Yes, V. Sharma, Sobuls, Preston, Safi, Dil Singh, Dharani Seher. देखो अब आप ये सोचो, अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है वो कहाँ मेंशन है? 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट है कि नहीं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का डिस्क्रिप्शन खोलो, है ना, उसमें फेडरल लिस्ट लिखते हैं, यूनियन लिस्ट की जगह फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट ऐसा वर्ड लिखते हैं, ठीक है। फेडरल लिस्ट मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट की जगह प्रोविंशियल लिस्ट, तो कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया ना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम 12th की बोर्ड में, एक बहुत फेमस प्रोमिनेंट गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। सो यू शुड नो इट, दीस आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस। सी इज द राइट आंसर। अच्छा, एक सवाल और है, ये तो हो गया इसका आंसर। इन चारों में से कौन, which of them introduced the concept of separate electorates? सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कॉन्सेप्ट इन चारों में से कौन से लॉ ने इंट्रोड्यूस किया था? ये भी एनसीईआरटी के बुक में मेंशन्ड है, एनसीईआरटी हिस्ट्री इफ यू रीड इट। यस वीर शर्मा, वेरी गुड। सो सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किया गया था वो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में, ठीक है। फॉर मुस्लिम्स इट वाज गिवन लेटर ऑन, इसको एक्सपैंड किया गया था। इफ समवन इज सेइंग एक्सपैंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, देन इन 1919 रिफॉर्म्स जिसमें इट वाज गिवन टू सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियंस, यूरोपियंस आल्सो, ठीक है, तो बाद में ऐड किया गया। बट इंट्रोड्यूस वर्ड लिखा जाएगा, सो द ऑप्शन ए वुड बी द आंसर, द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। अगर एक्सपैंड किया पूछा जाएगा, सो इट वाज एक्सपैंडेड फॉर अदर कम्युनिटीज इन 1919, ठीक है। सो यू शुड नो इट, दीस आर बेसिक क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जाम्स। Now this question is directly from NCRT book. It's the NCRT book. Yes, Sobobal, Sayush, Dharini, Samar, Tanvi। और ये पता है मेरे ख्याल से बोर्ड्स वगैरह पूछा भी गया, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे वो कैसे आए थे? दो तरह से, ओके। देखो, एक जो थे प्रोविंशियल असेंबली, यानी जो गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस जो आया था वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने इलेक्ट करके भेजा था, ठीक है, ओके। और एक होता था जो प्रिंसली स्टेट्स, यानी जो राजा के दरबार, जो छोटे छोटे राजा होते थे, वो लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट नॉमिनेट करके भेजते थे। दे यूज्ड टू चूज, वहां कोई इलेक्शन नहीं होता, प्रिंसली स्टेट में तो राजा होता है ना, सो राजा नॉमिनेट करते थे अपने आदमी को और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजते थे। बट जो ब्रिटिश प्रोविंसेस होते थे जिसमें डायरेक्टली ब्रिटिश प्रोविंसेस आर रूलिंग, तो वहां प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, इन स्टेट लेवल पर एमएलए टाइप समझ लो, उस टाइम के एमएलए, तो वो चुनते थे, वो इलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को भेजते थे, ठीक है। यस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। यस वीर शर्मा, ग्रेट, वेरी गुड। Anvi, Samar, Dharini, Ayush, you are right. So C is the right answer. These are not very difficult question, थोड़ा सा common sense लगाओगे। Here's the next question, and ये भी न्यूज में था, that is why I'm asking it. This request, guys, everyone please press the like button and subscribe to the channel. This was in the news because a petition was filed in the Supreme Court in this regard. कौन सा petition था? Yes, Dharini, Anvi, Veer Sharma, you are right. Directive Principle of State Policy, ठीक है, और 51 क्लॉज सी यूज किया गया था, है ना, ये वाला क्लॉज यूज किया गया था।
because there were reports that India was exporting arms to Israel and also some people filed petition. हाँ, yes, very good. So इसीलिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. So the right answer is B. Those who have answered B, you all are right. Yes, Safir Nomani. Yes, B. Sharma. Now this is the next question. Since it is very much in the news, and that is why I have emphasized on it. बताइए. Yes, Anvi, Dharni, Veer, Ayush, Samarth. बहुत से लोग ये पूछे सब 6 शेड्यूल ना रिलेटेड है, सब दोनों रिलेटेड है. बोथ आर फॉर गवर्नेंस इन ट्राइबल एरिया. व्हाट इज द डिफरेंस? कुछ डिफरेंस बता सकते हो? मैंने लास्ट कल की क्लास में बताया भी था कि दे आर डिमांडिंग 6 शेड्यूल, नॉट 5th शेड्यूल. और 6 शेड्यूल में कौन कौन रीजन आता है? 6 शेड्यूल में आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का रीजन है ना, मैंने बताया. एंड रेस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज अंडर 5th शेड्यूल. इसमें 6th शेड्यूल में पावर ज्यादा दिया जाता है. मींस आप समझ लो, इट्स मोर ऑटोनॉमी इन 6th शेड्यूल एज कंपेयर टू 5th शेड्यूल. ठीक है, दोनों ट्राइबल एरियाज को रेगुलेट करते हैं. अगर ऑप्शन में जैसा हो उस हिसाब से आपको मार्क करना है. यस, मोर ऑटोनॉमी इन 6th शेड्यूल, राइट. धरनी, प्रेसिडेंट, राइट. ऑटोनोमस काउंसिल्स, आयुष. यस, वीर शर्मा. हाँ, तो उसमें ये कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इवन सम केसेस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट के आसपास इक्विवेलेंट पावर्स वगैरह होते हैं. सो दैट इज व्हाई दे आर डिमांडिंग 6th शेड्यूल, स्टेटहुड बैक एंड ऑल दीस थिंग्स. तो ये मैंने बताया इस क्लास में. सो आई होप यू मस्ट हैव वॉच्ड इट. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, स्टेट लॉज डज नॉट अप्लाई. वेरी गुड प्रेसिडेंट. हाँ, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट कहां से कनेक्ट कर सकते हैं? वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि सिर्फ we should not care only about the rich but the weaker, the poorest and the poor. Even the last man standing at the last row should be served, है ना. सर्वोदया प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना. इंक्लूसिव, है ना. 39BC. यस, वेरी गुड वीर शर्मा. 39BC is very much in the news. और एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट यहीं से फ्लो करता है. बी इज द राइट आंसर. ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, प्राइवेट प्रॉपर्टी 39BC एंड ऑल. यस, यस, ग्रेट. नाउ इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर मी. देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सही बता पाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो डू नॉट बी इन अ हरी and please answer this question. ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है एग्जाम हॉल के लिए कि अगर कोई डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन आए, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है, तो ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कूल होकर के सोचें. ठीक है, ये आपका एग्जाम हॉल की प्रैक्टिस है, समझ लो. मैंने क्या कहा था कि let me see how many of you can answer me correctly in the first attempt. I'm very sorry, I have not seen even a single correct answer. Yes, now Samarth Singh has answered me correctly. Why? मैं आपको क्या कहा था? Please read the question carefully. This mistake you will do in the examination hall also. Why I am doing this practice? मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ? तो कि अगर आप यहाँ पर गलत कर दोगे कोई बात नहीं. ठीक है, you have little bit of ये कि मेरे से गलती हो गया ये वो, but you should not do this in exam. इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ घुमा के, ट्रिकी एंड ऑल, because so that whatever mistake you want to do commit here but not there. ठीक है, ये दोनों बहुत सिंपल है, यही दोनों तो डिफाइन करता है डीपीएसपी को. तो अदरवाइज सी आंसर होना चाहिए था, बट इनकरेक्ट लिखा था, सो द आंसर वुड बी डी. हाँ, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको हिंट भी दिया था. दोनों एक्चुअली 37 में मेंशन है ना. मतलब ये तो 39BC में मेंशन कह सकते हो. सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट, सारा कुछ 39BC से फ्लो होता है. और ऑप्शन 2 जो है ना वो आर्टिकल 37 में मेंशन है. ये मैंने कई बार बताया भी. ठीक है ना. 39BC टॉक्स अबाउट सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट. एंड 37 में लिखा है कि इट इज नॉट नॉन इन्फोर्सिबल. ठीक है. हाँ, तो जब हम करते क्या है, यस सर यू आर राइट,
एग्जाम हॉल में अभी मैं आपको ना क्या करता हूँ, इनकरेक्ट करेक्ट को अंडरलाइन कर देता हूँ, बिकॉज मैंने इस केस में डेलिबरेटली नहीं अंडरलाइन किया था, ठीक है, सो दैट आई वांटेड टू सी कि अगर आपका कॉमन सेंस मतलब कितना मतलब केयरफुल है आप, ठीक है, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन हॉल आई विल नॉट बी देयर टू अंडरलाइन द नॉट या इनकरेक्ट। आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि कहीं करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है, ठीक है, बी केयरफुल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अभी मैंने बताया 3 लिस्ट थी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट हो गए थे, यूनियन स्टेट कंकरेंट भी कह सकते हो, लेकिन एक रेसिडुअरी पावर्स होता है जो आज भी होता है, रेसिडुअरी लिस्ट या व्हाटएवर यू कैन से। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में किसको दिया गया था? यस, वरना गो टू गुड कॉलेज ने बी बताया, शहर, वीर शर्मा, आनवी, धरणी, सुगर्णम। यस, द राइट आंसर इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया था। करेंटली किसके पास ये पावर है? रेसिडुअरी पावर्स किसके पास होता है टुडे? इफ आई आस्क टुडे, there's union list, state list, concurrent list, एक होता है रेसिडुअरी लिस्ट का मतलब होता है जो भी चीज इन तीनों लिस्ट में नहीं है, if it is not in the three, ठीक है। was there a federal legislature? हाँ, something similar to imperial legislative council होता था, या फेडरल लेजिस्लेचर यूनियन लेवल पूछ रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। खैर, हाँ, अभी कंटेंट्री सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब यूनियन पार्लियामेंट के पास है रेसिडुअरी पावर्स, बट उस टाइम पर गवर्नर जनरल या वाइस रॉय के पास हुआ करता था। हाँ, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड, हाँ, सो यू शुड नो दिस, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। So this is all about today's class. Please press the like button, share this video, and I'll be meeting you tomorrow at 6 p.m. I hope you would have enjoyed the session. आपको इस टाइप का सेशन पसंद आ रहा है? Yes or no? ये संडे वाला? I hope. Darin is asking, sir, in tuition, Darin, to be very honest, in tuition sometimes do not work. ठीक है, इसीलिए I would say कि आप जो है ना ज्यादा मतलब most of the current affairs कवर करके जाइए, एंड बी रेडी एग्जामिनेशन हॉल में, बी रेडी फॉर द सरप्राइज, मतलब डरना नहीं सरप्राइज देख के, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।